यूपीआई के माध्यम से अगर देखें सर 3,14,000 करोड़ रुपए एक साल में ट्रांजैक्शन हुआ है, इतने रुपए का ट्रांजैक्शन। और स्थिति यह है कि आज यूपीआई प्लेटफॉर्म केवल भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, तो यूपीआई बन गई सर इस बिल के माध्यम से यह कहा गया है कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वर्चुअल फॉर्म में डाटा हो, क्लाउड बेस्ड फॉर्म में हो, वो सभी को एविडेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी के साथ साथ 1 मिनट में सर यह इस बिल के माध्यम से जहां हमने जब बैंकों को बैंक बुक को डिफाइन किया, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वह बैंकिंग और उससे एलाइड जो अन्य संस्थाएं उनको भी डिफाइन कर सकता है कि यह भी बैंकिंग के जैसा इनके साथ भी बर्ताव होगा। और उसी के साथ साथ सर जो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में भी पहले जो कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग जजमेंट देते थे, इसमें इस बिल के माध्यम से इसका भी सुधारा गया है सर। इस प्रकार से एडमिशन भी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा उसको बाध्य माना जाएगा, चाहे साइबर क्राइम हो चाहे अन्य क्राइम। मैं पुनः आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही क्रांतिकारी सुधार लिया गया है। मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत के संकल्प में यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसका समर्थन करता हूं। श्रीमती राजाथी जी प्लीज। வணக்கம் சார். இந்த வங்கிகள் குறித்த பில்லில் புதிதாக பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. முதல்ல பேப்பரில் இருந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அத்தனையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நம்முடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர்கள் நம் முன்பாக வந்து இந்த விவாதங்களுக்கு பதில் சொல்வதற்காக அமர்ந்திருக்கிறார்கள், மகிழ்ச்சி. அதே போன்று நம்முடைய உள்துறை விவகாரங்களில் மாணவர்கள் போராட்டம், மாணவர்கள் மீதான கடுமையான தாக்குதல் பற்றி பேசுவதற்கு ஏன் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் வர மறுக்கிறார்? You are not interested in speaking on the bill. That will not go on the record. You speak on the bill, only that will go on the record. No, it will not go on. Shri Manas Ranjan Mangraj. Shri Manas Ranjan Mangraj, please. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to speak on the Bankers Books Evidence Bill 2026. At the outset, I support the objective of this bill. As banking has become increasingly digital, our legal framework must also be updated. Today, banking records are maintained electronically, and the law should recognize this change. Sir, however, I would like to make a few suggestions. First, data security and privacy must be given the highest priority. Banking records contain sensitive personal and financial information. The government must ensure strong safeguards to prevent misuse, unauthorized access, and cyber threats. Second, the authenticity of electronic records is very important. Courts must have confidence that digital records are genuine and have not been altered. Proper standards for certification, storage, and audit trails should be put in place. Third, capacity building is essential. Judges, investigative agencies, bank officials, and enforcement personnel should receive adequate training to handle electronic evidence effectively. Sir, we must also remember that not every part of the country has fully adopted digital banking. Many people in rural and remote areas still depend on traditional banking systems. The implementation of this law should not create difficulties for them for smaller financial institutions. This bill should strengthen public confidence in the banking system while ensuring transparency, security, and fairness. With those observations, I support this bill. Thank you, sir. Thank you, Manas Ranjan ji. Manisri S. Niranjan Reddy. Thank you, sir. So my party and I rise to support the bill. The bill seeks to update an old existing law, tries to make it technology neutral. Sir, we understand the reason for this bill being made, but there's one concern I wanted the Honorable Finance Minister to consider.
Providing for a statutory form is very salutary because now there will be one standardized form, sir. But the statutory form requires the officer giving this particular certification to indicate about and certify about the integrity, and in a cloud and in the computer mechanism that is operating, it may be difficult for one bank officer to certify the integrity. The bill thankfully has a provision where central government under clause 14 can issue an order to obviate the difficulties, sir. Otherwise, a bill intended to protect the banker and not to disturb them from their regular actions can tomorrow become a problem area. I'm just bringing this to the notice of the Honorable Finance Minister. Sir, second, now this is a slightly larger issue, not just in relation to the bill. I fully understand, sir, why the bill in clause 4 says that this may be applicable to any class of persons operating in the financial sector. So it will be impossible to categorize today because technology is moving so fast that we could have new classes coming up tomorrow. I understand the reason for having this dynamic approach. So this is an area where we as parliamentarians have to now start thinking more seriously. Sir, we will not be able to come back to the parliament each time for making a new law the moment there's a change in technology or an application. So we may have to entrust this responsibility on delegated legislation. But then this creates a problem that if this is going to be excessive delegation, what is going to be the parliamentary supervision? Sir, our standing committees, our subordinate legislation committee are all conceived back in the day when there was no necessity of doing this. Sir, I call upon the chair of this house and maybe the Loksabha, sir, we may have to come up with some scheme where we'll have to give flexibility to the government to have this delegation. Sir, just 1 minute, it's a very important issue. Sir, this is not about this bill, it's going to come in many matters. And since many people have walked out, give me please take one. your time. Yes, Yes, sir. please. Sir, we may have to come up with a mechanism where we may have to give flexibility and elbow room to the government to ensure that they make these changes very quickly. Otherwise, what happens, sir, is we will not be competitive as a country, we will fall behind. But when we have to do this, we will not be able to come back to parliament to make a law each time. Delegation is necessary. But what is the parliamentary supervision? Sir, the House may have to come up with some mechanism for ensuring that a committee on subordinate legislation works better. Sir, last point, I compliment the government that they have defined just cause, because this is an improvement on the old act, and this is contrary to what I was saying, sir, that this is what the bill needs to provide, because just cause is defined, the courts will not be able to use it at their whim. Thank you so much, sir. Thank you. Dr. M. Thambi Duraiji. Time I have to, what are the time I have? 1 minute, sir. Huh? 1 minute. Sir, Honorable Deputy Chairman, sir, 1 minute. Sir, you are enough capable to tell. Right to speak on the bankers' Sir. books evidence bill 2026 on behalf of my party, ADMK party, and my leader, Edapadi Palaniswamy. I appreciate the Honorable Finance Minister as taking all the efforts to fulfill the Prime Minister's vision to modernize the everything. That is what I am appreciating her. So at the outset, I would like to appreciate government for this. Sir, the bill rightly explained this. Actually, the existing bill is Evidence Act was enacted in 1891. That is the act actually there. Now, the government has come forward by bringing out the new list, whatever the colonial rules are there. The objective of the government is to bring the new rules. I appreciate that. At the same time, the bill rightly expands the meaning of banker's book to cover not only physical records, but also electronic, digital, virtual, wrote, and at the same. Finally, sir, don't want much time. The cyber fraud, identity theft, unauthorized transaction, and manipulations of the digital records emerging challenges. Therefore, I urge the government to continuously strengthen the cyber security framework associated with the records. I also welcome and appreciate the Honorable Minister bringing this. I support this bill, sir. Thank you very much. Thank you, Thambi Duraiji. माननीय श्री राजेंद्र हीरालाल जैन. माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपस्थित हुआ हूं. कानून तभी जिंदा रहता है जब वो समय के अनुसार अपने को बदलता है. 1881 का कानून 2026 के डिजिटल भारत बैंकिंग व्यवस्था के साथ न्याय नहीं कर सकता. इसलिए आदरणीय वित्त मंत्री महोदय और हमारी सरकार ने इस कानून को लाया है. जिस समय कानून बना था उस समय न कंप्यूटर थे, न इंटरनेट थे, न मोबाइल बैंकिंग थी, न डिजिटल हस्ताक्षर थे.
आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का संचालन कर रही है। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त 2024-25 में 221.67 बिलियन से अधिक रिटेल डिजिटल भुगतान लेन देन यूपीआई की हिस्सेदारी 81% रही। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात और एक उन्नति की बात है। आज इस विधेयक के माध्यम से जो न्यायालयिक परिस्थितियां हैं, न्यायालय बार बार बैंक के अधिकारियों को न बुला सकेगा, इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी और बैंक के कर्मचारियों का और ग्राहक का भी समय बचेगा। और जब समय बचेगा तो हमारे देश की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा लोन हो, पीएम एम्प्लॉइज गारंटी हो, एआईएफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीमें हैं, उन स्कीमों को ज्यादा समय मिलेगा और हम देश की उन्नति प्रगति में भाग ले सकेंगे। माननीय वित्त मंत्री महोदय, इस विधेयक के माध्यम से मैं एक बात को और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज के समय में हम ग्रामीण क्षेत्र में जो सहकारी बैंक चलाते हैं, वो सहकारी बैंकों के माध्यम से सबसे ज्यादा शासकीय स्कीम, किसानों को लोन और शासकीय स्कीम के माध्यम से हम भी हमारी जो सहकारी बैंक है ग्रामीण क्षेत्र की, उनका भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से आप अगर उनको व्यवस्था देंगे तो साहब आधा मिनट जरूर आज दे सकते आप, जरूर हमारी बैंकें मजबूत होगी। और बैंक, यह विधेयक केवल बैंक का